रहा है। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था कि मेरी जर्नी भी यही रही है। लोग आज बात कर रहे हैं कि ऐसे करना चाहिए और वैसे करना चाहिए, लेकिन आज साइंस के जुड़ने से इट इज़ प्रूफ दैट you can take care of your internal systems by just being yourself, by just doing the simple things, staying away from allopathy. तो मेरे लिए ये इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये शुरुआत है। आई मीन आई वॉन्ट टू गेट इन टू इट, आई वॉन्ट टू डीप डाइव इन टू इट, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में मैंने हमेशा चाहा कि कुछ वापस दूँ। आई थिंक दिस हेल्थ इज़ समथिंग दैट आई कैन गिव बैक। सो द आइडिया इज़ कि ये एक क्लिनिक है, मैं मानता हूँ ये हमारी बायो हैकिंग की क्लिनिक है। बायो हैकिंग का एक सेंटर होगा और फिर बायो हैकिंग की एक डेस्टिनेशन होगी। मैंने कभी अपने प्लान्स के बारे में बात नहीं किया हूँ, क्योंकि आई ऑलवेज बिलीव पहले डिलीवर करते हैं, चली तो फिर बात करते हैं। लेकिन यहाँ our plans are ready. Probably the next one would be a 15,000-20,000 square feet setup. Wow. Because biohacking is not just about machines, it's about mental fitness, about creating the atmosphere, creating nature around you. क्योंकि जब वो डोपामिन बाहर निकलता है, खुशी की हैप्पी डोपामिन जो आपने सुबह कहा, उससे सब बदलाव आता है। You know, मेरे लिए तो एक बच्चे को भी, अगर मैं हमेशा कहता हूँ 1 साल के बच्चे को या 2 साल के बच्चे को आप ड्रिबलिंग सिखाओ, हैंड आई कोऑर्डिनेशन अपने आप आ जाएगा, जो आप अभी ढूंढ रहे थे। कि यार मैं समझता हूँ आप में ये नहीं है, लेकिन वहाँ से शुरू होता है। बच्चा बॉल ऐसे पकड़ लेता है और उसमें कॉन्फिडेंस उतनी बढ़ती है, ना कि ढूंढता है बॉल के लिए। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, शुरुआत वहाँ से होनी चाहिए। एंड यू कैन बी अ बायोहैकर योरसेल्फ। तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ सेंटर्स नहीं होंगे, लेकिन वो नॉलेज भी दिया जाएगा। सिर्फ उनके लिए नहीं जो हमारे सेंटर्स में आएंगे, लेकिन through the medium of social media and everything, जो यहाँ नहीं भी आ सकते, they should gain for it. So there are big plans and this is my ultimate dream कि एक 10-15 एकड़ का एक सेटअप हो, जहाँ वो बायोहैकिंग सेंटर हो, जहाँ लोग जाके कुछ दिनों को लेके अपने आप को बदल सके। The beauty is that both of you all are leading with example, in the sense you all want to bring about a change. That's the ultimate motive. So you were saying something. So also biohacking is also an use of science and technology, wherein we try to work on ourselves. Similarly, there's a science between me and Sunil sir. Science is God's willing to be together and create a platform for each and every person in India to experience these services. So that's the main science, the God's science, is that we both are together. That's very and without him, I don't think so I'll be able to achieve. But then he's got the motivation behind, you know, he just pushed me every now I meet him and said कि क्या कर रहा है, अभी तक हुआ नहीं है. So that's what we have been working on it since almost 3-4 years down the line, and today we are here sitting together on this platform and giving it to the public. But it also intrigues me, not just in capacity of a host, but genuinely I'm asking this question on behalf of everybody. We're all in the media and press, we all have crazy hours of working. And as Gen Zs and millennials, I come from a millennial generation where one common problem I've heard, I'm into fitness, so I play sports, so I know I've lived an active life. But I know a couple of my friends who always say, यार थक गए. मैं बोला क्या किया तुमने? बोला कुछ नहीं यार, पता नहीं, बस थक गए. This is a common problem that we all face all the time. यार थक गए बिना कुछ काम किए. And I think वो कहीं ना कहीं मेंटल थकान है जी. मेंटली आप थके हुए हो इसलिए आप, लेकिन अगर आप एक रूटीन डालोगे अपनी जिंदगी में, रूटीन कोई कुछ भी हो, आप ब्रश करते हो, सुबह उठ के नहाते ही हो, तो वैसे ही आप रूटीन डाल दीजिए, देखिए कितना फ़र्क पड़ता है. एंड गेट इनटू अ स्पेस वेयर यू आर हैप्पी. आई मीन मैंने आई थिंक 8 साल 10 साल पहले ही छोड़ दिया था कि यार फ्राइडे वाइडे आता रहेगा, यू नो, इट्स नॉट वर्थ क्राइंग एंड क्रिबिंग अबाउट. 100 फिल्में तो कर ली मैंने, 10 फिल्में करके लोग घर चले गए, मैं क्यों नाराज़ हूँ. एंड आई थिंक दैट मेंटल स्ट्रेंथ ऑफ माइंड चेंज्ड एवरीथिंग मी. कोई मुझे दुख पहुँचाता है तो मुझे पहले हफ्ते भर 10 दिन मुझे बहुत ख़राब लगता था. उसके बाद मैंने कहा कि यार ये तो 10 दिन का है, अगर मैं इस वक्त को कम कर दूँ फिर क्या होगा. कम होते गया और आज ऐसा वक्त है कि बुरा लगता है, उसके बाद मैं सोचता हूँ ठीक है यार कल ख़त्म हो जाएगा, एंड ख़त्म होता ही है. तो आई थिंक वी नीड टू बी मेंटली वेरी वेरी स्ट्रांग, वरना साइंस या कुछ भी काम नहीं करेगा. You biohacked. Yeah, you biohack that mind of yours to tell him कि be there and focus on the good things. यार अगर मुझ में आप में मुझे अगर बुराइयाँ दिखाई देगी तो मैं अच्छाइयाँ कुछ लेकर ही नहीं जाऊँगा. तो लेकिन अगर अच्छाई दिखाई दे तो मुझे सब में कुछ ना कुछ अच्छा दिखाई दे रहा है. एंड दैट्स हाउ. गलतियाँ मुझसे बहुत हुई है मेरे एज पे, मैंने बहुत सारी चीज़ें की होगी जो गलत होगा,
लेकिन उस गलत से सीख कर मैं यहाँ पहुँचा हूँ. And I think if I can impart that knowledge to people, कि be happy, make friends, I think everything falls into friends. इसलिए groups, friends, ऑफिस जाना, दोस्तों से मिलना, वो एम्बियंस को देखना बहुत ज़रूरी है. वो 3 साल पैंडेमिक से जो अब हम गुजरे जी, तो कभी कभार तो ऐसे लगता था कि एक दूसरे की जान ले लेंगे घर में. You know, it's because of the monotony. वो monotony को तोड़ना बहुत ज़रूरी है लाइफ में. ईच एंड एवरी हमारा परसेप्शन देखने का नज़रिया, जो बीमारी है, जो रिपोर्ट है, वो अलग से. इट्स नॉटिंग दैट कि हम जो नॉर्मल देखते हैं वैसा नहीं. हमारा बेसिक नॉर्मल से पे नहीं बात करते. हम अपने कैसे इन्हांस करना है, कैसे उसके ऊपर करना है, उस ऊपर बात करते हैं. एंड देन वी कम टू नो वेदर दिस इज टेक्नोलॉजी. बहुत सारा है हमारे पास जो हम खाली स्कैन करके देख सकते हैं आपका, विदाउट इन्वेजिंग एनी पिन नीडल या कोई ब्लड, बिना चेक करके आपको बता सकते हैं कि क्या इश्यूज है आपके अंदर. वो भी सेलुलर लेवल पे देख के बता सकते हैं हम लोग. इट्स नथिंग दैट कि हमको आपसे ब्लड निकाल के लेके जाना है. हमारा खाली ये स्पिट रहेगा, हमारा खाली नॉन इन्वेजिव ऐसा स्कैनर रहेगा जहाँ पे वो देखेंगे और बता सकते हैं कि आपके प्रॉब्लम क्या है. एंड देन वील रिप्लेनिश देयर, देन वी वर्क ऑन इट, एंड देन वी कैन व्हाट यू कॉल दैट, इट्स कॉल्ड एंटी एजिंग बेसिकली, जो हम आपका रिवर्स करेंगे, रिवर्सल डिजीज वैसा कर सकते हैं. Because it's about preventive wellness. We've been through one pandemic and we want to make sure that if ever the next one hits, we are way ahead of the curve. You know, we can cure our own bodies. We can cure ourselves mentally, physically and otherwise. Even from a science perspective, we are way ahead. And somewhere down the line, biohacking involves a lot of India also. So you see, it's about being happy. It's about you breathing right, you understanding your ailments and working on it, whether it's through science or whether it's individually. Some people can afford, some people can't. Whether it's nutrition that'll cure it, or whether it's that mental space. What happens to the generation that comes next? For me, biohacking is also walking in a forest. You know, people talk about grounding and walking bare feet. Our Rishi Munis and our gurus always did it. First it was called junk, dirt, Indians, sit on the ground, but everybody is following it. So the West has always picked up everything, presented it differently. Yoga, hot yoga. अरे गर्मी में ही योगा होती है इंडिया में यार. कहाँ बर्फ पड़ती है सब जगह. So that's why I've always argued, I've always fought, and I've always held our own, and I've always placed ourselves ahead of anybody else. So whether it's healing through food or healing through spices, this is what biohacking is all about. The minute you have an idea of your ailment, you start working on it. It could be here, it could be at home, it could be anywhere. So we're there, and because Lalit is married to this cause. Sorry, but because Lalit is married to this, there's a lot of focus, and Satvik he is anyways. So he's God's child. It works brilliantly for me because there's a mindset that works, and for me depression is not about अरे यार ये पागल है यार. No, it's about a chemical imbalance. It's about looking at somebody differently. If it's a drug addict, I would never say इसको जेल में डाल दो यार. मैं बोलूँगा work on him. हमारा बच्चा हो सकता है, आपका भाई हो सकता है. Are we going to just dump someone, or are we going to start working on that child? So biohacking also involves being a great human being. Also means being compassionate about someone next to you. Because that dopamine from him might flow into him and he might start feeling better. I watch cricket, I watch a sport, I watch children playing. I feel good about it. I get my childhood back. That is what it is all about. So you writing a gratitude journal also is a biohacking basically. It's speaking something good about people, saying good about people, like how Sunil said. Seeing a good in a human being is biohacking. It's as simple as it. You had a question, ma'am. Yes. Hi, sir. Samina here from Times of India. My question is to Sunil, sir. I wanted to ask you, have you tried the biohacker treatment on you, and what effects have you seen on yourself? Clarity, especially from a skin perspective, ice and that dunk feels amazing. I mean, it's death when you get into it, but the recovery is unbelievable. And the thing is, for me, more than treatments, I've always followed this routine. There is this term now called biohacking, which is very good. Biologically, you understand yourself, and you're hacking all the ailments and working on it. So
like I said, this is a clinic that will, the science and you'll understand what is wrong with you. But the larger centers are centers where you can understand yourself better and heal yourself on your own. Like I said, I send you into a forest. If you ever go for a safari in the morning, when you're back from the safari, you're on a different high. What is that high? Has somebody injected anything into you? Nothing. It's just that you breathe better, you're thinking better. You know, there's mind fog that is there, doesn't exist anymore. It's like yoga and sport and the adrenaline that you get when you exercise. That's it. And yes, every treatment is something that I want to go into. There are certain issues that when I checked, there are some impurities in my chemicals in my own bloodstream, and I've always believed that I've eaten right. It's not what I've eaten; it's where the produce has come from that probably is wrong, and we have no control over that. So it's just about understanding and improving and staying healthy. Thank you. Mr. Damani, one very important question is about the therapies. Sir just spoke about the ice therapy and a lot of other things that help. But can you take us in brief through the therapies that are there that you will be providing in the Biohacker? So first of all, we have IV therapy, wherein we will deliver the nutrients directly into your bloodstream wherever we find that there is any deficiency in vitamin or minerals or any such problems we have. We'll try to give the IV as per our reports, and then that is delivered immediately, and that's the instant result what we can see in few hours also. And thereafter we have compression therapies like हमारा जो ड्रेनेज सिस्टम होता है बॉडी का, जो लिम्फेटिक ड्रेनेज बोलते हैं उसको. सो बेसिकली इट रिमूव्स द लिम्फ ड्रेनेज फ्रॉम आवर नोड्स, उनको डिटॉक्स कर लेते हैं. देन वी हैव HBOT जो हाइपोबेरिक ऑक्सीजन थेरेपी बोलते हैं, जहाँ पे है वी हैव बेड लाइक एंड यू आर इन ले डाउन इन कंप्रेस्ड इन्वायरमेंट. वहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो बहुत ज़्यादा होता है एंड इट गोज़ इनटू योर प्लाज्मा डायरेक्टली एंड गिव द रिजल्ट्स. इट रीचेस टू द each and every part of the body much faster as it's required whenever it is a problem. Then we have peptide therapy. So peptide is something जो अभी next generation treatment होगा science में. It's going to be a big one. जहाँ पे peptide will be working as a protein treatment है basically. We are giving protein into your body and it's going to heal. बहुत सारे ऑपरेशंस हैं, सर्जरी है जो बच सकती है उससे. वी कैन रीजनरेट द टिश्यूज़, लिगामेंट्स, बहुत सारा फास्ट मूवमेंट होता है. इट्स अबाउट 30 days ट्रीटमेंट एंड यू हैव अ डिफरेंट ओवरऑल, टोटली अलग ही उसका रिजल्ट है. देन वी हैव इंफ्रारेड ओजोन थेरेपी, जहाँ पे वी एबल टू बर्न 400 कैलोरीज. वी एबल टू डिटॉक्स, हमारा डिटॉक्स जो भी वायरस, फंगाई, जो भी डिटॉक्स ट्रीटमेंट हो जाता है. इट्स अबाउट 30 minutes सेशन, जहाँ पे वी एबल टू गेट दैट एनी मेटल्स जो भी है वो सब डिटॉक्स कर सकते हैं हम लोग. देन वी हैव रेड लाइट थेरेपी, जो ये बहुत अभी आज की तारीख में बहुत चल रहा है. रेड लाइट थेरेपी इज बेसिकली डिफरेंट टाइप ऑफ रेड लाइट, इंफ्रारेड लाइट्स होती है जो आपके स्किन में अंदर जाती है. इट गोज़ डीप इनसाइड. एवरी लाइट हैज़ अ ब्लू, ग्रीन, red. Every light has a different nanometers का उनका strength है, which goes deep inside your skin, stimulate the mitochondria and basically हमारा जो cellular treatment होता है इसके ऊपर, it works on the roots, the cells, जहाँ पे हमारे ये ATP जनरेट होती है. Then we have skin का glow होता है. Then we have a lot of pain relief things which is work through red light therapy. Then we have इंट्रावेनियस लेज़र थेरेपी, जो रेड लाइट थेरेपी होती है. ऐसा सीधा डायरेक्ट हम आपके ब्लड में फ्लो में वी आर गेटिंग इनटू दैट एंड वी गिविंग लाइट्स इनटू, तो उसका हीलिंग इज़ मच मोर फास्टर, बहुत ज़्यादा फास्ट होता है उसके वजह से. सो देन वी हैव अ क्रायो थिंग विच इज़ वी पुट योर सेल्फ इन, आपको एक इन्वायरमेंट, मतलब जो बर्फ़ का इन्वायरमेंट अबाउट -डिग्री होता है, इस ऑलमोस्ट 0 डिग्री पे रखते हैं आपको, जहाँ पे आपका ब्लड फ्रीज हो जाता है. एंड देन इट्स इट इज़ देयर फॉर द मोमेंट टू कम आउट. द उसका
फ्लो जो है इतना फास्ट हो जाता है कि एनी पेन इन द बॉडी लाइक इट्स अ रिकवरी बेसिकली इट्स वर्क एज अ recovery for people or the athletes or any of the thing problem we have is boost your immunity also. So there are multiple things which we work. We see we have a DNA test, we have a oligo scan. Basically, we scan something. So a lot of new invented items are there which we work on it, and then we have a different results. Overall, we can work on them.